Right, class, it's good afternoon. After lots of effort, at last we are live. So today we shall be starting with another ratio, that is a proprietary ratio. Which ratio? Proprietary ratio. The formula is very simple. First of all, write down the formula. Proprietary ratio is equal to shareholders fund by total assets. Now, what you need to understand is what this ratio actually represents. When you are saying that proprietary ratio is the relationship between assets of the business. So total assets of the business, as you all know, is the summation of the capital and the liability. The capital and the liability. Capital plus liability is equal to what? Assets. So you want to know as to what portion of the total assets of the business are in the form of shareholders fund. Now, what all things are to be included in shareholders fund? Basically, we include the equity share capital, reserve and surplus, isn't it? Or the share capital, you may say. Share capital refers to what? Both preference shares and equity shares. Undistributed profits, reserve and surplus. So this is what you get as shareholders fund. And when you divide the shareholders fund by total assets and you multiply it by 100, you get what? You get the proprietary ratio. Proprietary ratio means what portion of the total assets of the business are owned by the owners of the business or the proprietors of the business. Am I clear, class? Okay. So we shall be starting with few questions on proprietary ratio. The question is, from the following informations, calculate proprietary ratio. PROPRIETARY. From the following informations, calculate the proprietary ratio. From the following informations, calculate the proprietary ratio. You have share capital as rupees 6 lakhs. Share capital as rupees 6 lakhs. Reserve and surplus 1,50,000. Trade payables 1 lakh. Trade payables 1 lakh. Other current liabilities 50,000. Other current liabilities 50,000. Short-term provisions. Short-term provisions. Provision for tax 1 lakh. Short-term provision within brackets, provision for tax 1 lakh. When you add all these items, you get 10 lakhs. Total is 10 lakhs. Then again, continuing, tangible fixed assets 6 lakhs. Sorry, 5 lakhs. Tangible fixed assets 5 lakhs. 5 lakhs. Current investments 1,50,000. Current investments 1,50,000. Inventory is 1 lakh. Trade receivables 1,50,000. Cash and cash equivalent 1 lakh. Cash and cash equivalent 1 lakh. Total is 10 lakhs. Solve the question.
You can multiply it by 100 or you can leave it as it is. You need not to multiply it by 100. You can express it in the form of ratio also. Ideal ratio is it will be better that the entire total assets are being funded by the proprietors. That is 1:1. Did you get the answer? Plus, what is the answer? 0.75 is to 1. 0.75 is to 1. What it shows? It shows that 75% of the total assets of the business are being contributed by who? By the owners of the business or the shareholders. Next question. अब देखिए हम लोग again we are moving on to a very important ratio, interest coverage ratio. The name of the ratio is interest coverage ratio. Interest coverage ratio. Now, what is this interest coverage ratio? Anybody is having any idea about this ratio? Whosoever wants to answer, interest coverage ratio. Anybody? Interest coverage ratio shows the efficiency of a business in terms of profits, to pay off its interest, to pay off its interest burden. How many times is your profit in respect to your interest that you're supposed to pay? Say, for example, if you're supposed to pay rupees 10,000 annualized as interest, how many times is the profit? How many times is the profit of your interest? Is it twice? Is it thrice? Right? Or has the profit quadrupled in respect to your interest that you want to pay? Right? So interest coverage ratio shows the efficiency of the business in terms of profits, that your business is having sufficient profits to pay off its liabilities. And liabilities, what sort of liabilities? Interest. What sort of liabilities we are talking about? Interest. So interest coverage ratio is equal to, write down the formula, interest coverage ratio is equal to profits before interest and tax
profits before interest and tax divided by interest divided by interest divided by interest. Is the formula clear? Now write down the question. If profit before interest and tax is rupees 5 lakhs, if profit before interest and tax is rupees 5 lakh, and interest on long-term funds is rupees 1 lakh, and interest on long-term funds is rupees 1 lakh, calculate the interest coverage ratio. Calculate the interest coverage ratio. बनेगा बनेगा क्या होगा आंसर 5:1 5:1 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिए थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए From the following informations calculate interest coverage ratio. From the following informations calculate the interest coverage ratio. Profit after tax 1,70,000. Tax rate is 15%. And interest on long-term funds is rupees 50,000. 50.
बनेगा? हाँ, 4:2 कैसे निकालें? तुमसे कितना आएगा? हाँ? बड़ा नहीं क्या? 1231 नहीं आया है? देखिए कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। फॉर्मूले में क्या लेना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेना है, खुशी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। गुड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो बिफोर टैक्स के लिए क्या करेंगे? या आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 1,70,000। और प्रॉफिट टैक्स का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 15%. So this 1,70,000 is after, isn't it? This is after. तो बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स आप कैसे निकालेंगे? देखिए, तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट को एक्स मान लें। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो एक्स माइनस एक्स ऑफ 15% इज इक्वल टू कितना? यही ना है? ये सुनो, एक्स अगर मेरा टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, उसमें से 15% हमने दे दिया टैक्स, तो एक्स माइनस एक्स ऑफ 15% इज इक्वल टू 1,70,000। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 15x बाई 100 इज इक्वल टू 1,70,000। अब ये 85x डिवाइडेड बाई 100 इंटू, सॉरी, इज इक्वल टू कितना होगा? 1,70,000। और x बराबर 1,70,000 गुने 100 डिवाइडेड बाई 85, दो, कितना? 2 लाख हो गया क्या? कितना हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज हाउ मच? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2 lakhs। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना? तो बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स मतलब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा? इसमें तो माइनस हो चुका होगा ना, क्योंकि जब आप टैक्स पे करते हैं तो सारे खर्चों को काटने के बाद, तो इसमें टैक्स ऑलरेडी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस होगा, लेकिन इंटरेस्ट को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो एक्चुअली में हमारा अब प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख। हाउ मच? बोलिए, क्यों ऐसा? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या? हम टैक्स कब पे करेंगे? टैक्स, टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा कब होगा? जब सारा खर्चा दे देंगे ना। तो इंटरेस्ट भी क्या है? इंटरेस्ट भी क्या है? एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला, मतलब इंटरेस्ट इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। माइनस होने के बाद टैक्सेबल प्रॉफिट निकला है वो। लेकिन फॉर्मूला कह रहा है कि इंटरेस्ट और टैक्स दोनों देने से पहले का प्रॉफिट, दोनों देने से पहले का प्रॉफिट। तो मेरा टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट 2 लाख, और क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट कितना है? 50,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया? कितना हो गया? 2,50,000 डिवाइडेड बाई व्हाट? इंटरेस्ट इज हाउ मच? 50,000। तो 5:1। समझ में आए गलती कहां पे किए थे?
लिखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। समझ रहे बात? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तीसरा नाम क्या जी? तीसरा नाम मर्केंडाइज टर्नओवर रेशियो। क्या कहते हैं इसको? मर्केंडाइज टर्नओवर रेशियो। अब आप देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप निकालते क्यों है? आप इसका पर्पस क्या है इसको कैलकुलेट करने का? हम लोग इसको निकालते इसलिए है, ये जानने के लिए निकालते हैं कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है, हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है, उस स्टॉक का कितना टाइम्स हमने मार्केट में सेल्स किया है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टॉक दैट वी आर होल्डिंग हैव बी सोल्ड इन द मार्केट। जितना ज्यादा ये होगा, इसका मतलब ये कि हमारे बिजनेस पे हम लोग स्टॉक को होल्ड करके नहीं रखते। हम लोग स्टॉक को होल्ड करके नहीं रखते। हमारा स्टॉक क्या है? रोटेशन में। तो जितना ज्यादा वो रोटेशन में होगा, ये बिजनेस के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, डिके होने का चांसेस है। तो इसलिए बिजनेस वही अच्छा है जो अपने पास स्टॉक आता है और उसको क्या करे? सेल करे। तो जितना ज्यादा स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा, वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू उतना जनरेट करके देगा, वो बिजनेस के लिए उतना फायदेमंद है। तो स्टॉक कैसे है? बहुत आसान फॉर्मूला है इसके लिए। अब देख लीजिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिखते हैं आप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by what? Divided by average stock. Divided by average stock. क्या लिखते हैं? एवरेज स्टॉक। अब आप पूछेंगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? तो दो तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक और फॉर्मूला है COGS निकालने का। COGS निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस व्हाट? वेरी गुड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है रॉ नंबर 8? माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। विचार के बाद फिल इन द ब्लैंक। COGS निकालने का दो फॉर्मूला, सेल्स प्लस सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब में से क्या घटा देना है? क्लोजिंग स्टॉक घटा देना। लेकिन तो कैसे निकालेंगे COGS? तो सेल्स प्लस लॉस करेंगे। क्या करेंगे? सेल आएगा, COGS निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। अब अगर आपको नेट परचेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे नेट परचेज? नेट परचेज आप कैसे निकालेंगे? नेट परचेज इज इक्वल टू हाउ मच? वेरी गुड, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और एक बात है, अगर क्वेश्चन में
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कहीं से कोई स्कोप समझ में नहीं आए। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कहीं से कोई उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर सेल्स को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेंगे। सेल्स को ही क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन आवर फर्स्ट एफर्ट शुड बी टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Now we have another thing to find out. The other thing is average stock. एवरेज स्टॉक को फाइंड आउट करना है। इसका भी तरीका बड़ा आसान है। ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2 will give you average stock. Will give you average stock. Should we write a question now, or you want to note down the things? Where's your iCard? लिखिए, from the following data calculate stock turnover ratio. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,50,000। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,25,000। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,25,000 और इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर 1,75,000। Inventory at the close of the year rupees 1,75,000. Find out inventory turnover ratio. 1,25,000 at the end of the year 1,75,000. दस तक गिनती की नहीं बन जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 क्या बनेगा? 3:1। 3:1 कैसे आ गया भाई? 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5। 3:1। वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बन गया ना? एवरेज स्टॉक कितना होगा? 1,25 प्लस 1,75 3/2 1.5 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि सीओजीएस दिया हुआ है 4.5 लाख, तो 4.5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख कितना हो गया? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। Calculate inventory turnover ratio from the following informations. Calculate inventory turnover ratio from the following informations. Opening inventory 50,000. Opening inventory 50,000. Purchases 3,90,000. Revenue from operations 6 lakh. Gross profit ratio 30%. Gross profit ratio 30%.
पॉसिबिलिटी है, ये मामला फंसने वाला है या फंस गया है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? शुड आई? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इस क्वेश्चन में COGS भी नहीं दिया हुआ, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ नहीं है, दिक्कत है। आइए सॉल्यूशन देखें। सेल्स दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? सेल्स इज इक्वल टू कितना? 6 लाख का सेल्स दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 30% है। कितना परसेंट है? 30%। तो ग्रॉस किसके ऊपर निकलता है? सेल्स के ऊपर। मैंने भी क्लास में कई बार आपको बताया। तो अगर आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30/100, 30/100 हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मिसिंग है यहाँ पर, यस और नो? और सेल्स, नेट सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 लाख। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 lakhs into 30 divided by 100। Therefore GP बराबर 1,80,000 हो गया। बताएं आप, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। COGS का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को। क्या COGS इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस GP, यानी कि 6 लाख माइनस 1,80,000 बराबर 4 लाख कितना? 20,000। इज इट क्लियर? अब आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बखूबी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत आराम से बनेगा। मैं 2 तरीके से क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हैं? बाई सेल्स लिखते हैं कि नहीं लिखते? बाई सेल्स यहां पर कितना है? 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 50,000 दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस इज गिवन आल्सो एट रुपीज 3,90,000। यस और नो? ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने निकाल लिया कितना? 1,80,000। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो इसमें जाएगा, नहीं ना है। अब डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो डेबिट कितना है? 6 लाख 20,000। यहाँ पे आप देखिए ये भी कितना होना चाहिए? 6 लाख 20,000। डिफरेंस इज हाउ मच? 20,000। तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यस और नो क्लास? ठीक है, एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका जिससे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, COGS का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? COGS का वैल्यू हमने कितना निकाला? 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हम लोगों ने? 50,000। नेट परचेजेस कितना था? 3,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना ही है।
तो 4,20,000 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4,40,000 माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक होगा। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आ गया? 4,20 इस तरफ से आ गया, 20,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? 20,000। इज इट क्लियर क्लास? अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक वाज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, एवरेज स्टॉक इज 35,000। एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? 35,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने निकाला 20,000। तो 50,000 प्लस 20,000 70,000 डिवाइड बाय 2, इट कम्स टू 35,000. Now cost of goods sold, what we have calculated? We have calculated it as 4,20,000. So 4,20,000 divided by 35,000, it comes 12 आएगा क्या? देखो तो 12 आ रहा है। तो 12 टाइम्स आंसर क्या हो गया? 12 टाइम्स। इसका मतलब हुआ कि एवरेज स्टॉक का हमने 12 टाइम्स मार्केट में सामान को बेचा। बोलो यस और नो क्लास? व्हाट द आंसर? ऐसे ही बनेगा। चलो ठीक है, we shall be ending the session now.